Good morning, students. Book 1 is over. You have read about 13 chapters of Book 1, that was Indian Economics. Today we are starting Macroeconomics. It is second book, and in this book first chapter is Introduction. Introduction about different branches of economics. There are mainly two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. You have already read about these branches in other book also. You have been introduced about micro and macro once previously also. So today I am telling you that there were two main schools of economic thought, classical school and Keynesian school. School means group of study, कि दो अलग अलग ग्रुप्स थे इकोनॉमिस्ट के, एक क्लासिकल स्कूल के नाम से फेमस था और दूसरा कीन्जियन स्कूल के नाम से फेमस था. क्लासिकल स्कूल में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जो पुरानी विचारधारा के थे, और कीन्जियन ग्रुप में कीन्स और उनसे रिलेटेड इकोनॉमिस्ट थे जो न्यू थॉट लेकर आए थे, नई विचारधारा पर उनके आधारित थे विचार. सो व्हाट वर द थॉट्स ऑफ क्लासिकल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट. क्लासिकल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट क्या सोचते थे? दैट एन इकोनॉमी एज अ होल वर्क्स ऑलवेज एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ड्यू टू free play of market forces in a free economy and supply creates its own demand. So what does it mean? कि जो क्लासिकल स्कूल था, क्लासिकल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट थे, वो ये सोचते थे, उनका ये विचार था कि कोई भी इकोनॉमी हर समय एट एवरी टाइम वर्क्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर कोई भी इकोनॉमी वर्क करती है. उस किसी भी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हर समय फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती है. एंड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी सभी सप्लाई अपनी डिमांड को क्रिएट कर लेती है, यानी ओवर प्रोडक्शन की भी कोई सिचुएशन है ही नहीं. जितनी भी सप्लाई होती है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, उन सब की डिमांड क्रिएट हो जाती है, वो सब ऑटोमेटिकली सोल्ड हो जाते हैं और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वर्क करती है. और ड्यू टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस इन अ फ्री इकोनॉमी. फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, यू मस्ट नो ऑल दीज टर्म्स. मार्केट फोर्सेस आर टू डिमांड एंड सप्लाई. दीज आर टू powerful forces in the market which regulates the market, which regulate all the activities of market in a free economy, in a capitalist economy. Till early 1930s, classical doctrine of automatic full employment was largely accepted, but Great Depression of early 1930s, 1930 तक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के विचार सबने एक्सेप्ट किए, बट 1929 से लेकर 33 के बीच वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन सभी कंट्रीज़ ने फेस किया. डिप्रेशन मीन्स बिल्कुल लो लेवल ऑफ डिमांड, लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये 29 से लेकर 33 के बीच जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे, इंडस्ट्रियलाइज्ड थे, यूएसए और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत इंडस्ट्रियलाइज थे, हर तरह की वहाँ पर फैसिलिटी थी, इलेक्ट्रिक पावर, means of transport, communication, banks, other financial institutions. Still these countries also faced this depression, this situation of depression during 1929 to 33. The classicals could not explain this phenomena during the worldwide depression. तो इस डिप्रेशन पीरियड में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये फिनोमिना था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला, ये फेल हो गया और ये अनएक्सेप्टेबल हो गया, क्योंकि उस समय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को आंसर नहीं दे पाए कि इफ़ ऑल सप्लाई इज़ क्रिएटिंग इट्स ओन डिमांड, दैट वाई देयर इज़ वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड.
So, it was against this background that well-known British economist James Keynes propounded his own theory and wrote his own book, famous book, General Theory of Employment, Interest and Money, that is published in 1936, which brought about a revolution in economic thought called Keynesian Revolution. Keynes criticized the classical opinion, classical assumption of full employment and developed a new theory known as macroeconomic theory. So, now we should know the meaning of macroeconomics. Students, micro and macro, these are main two branches of economics, and there is only one letter difference in both the words I and A, micro and macro. I and A, only two letters are different, and these two letters tell us the meaning of these branches. I means individual units. When we study about individual units, behavior of an individual consumer, an individual producer, an individual farm, then we are studying about microeconomics. And A means aggregates. When we study about our economy as a whole, in totality, then we are studying macroeconomics. So, in macroeconomics, we study about aggregates, national problems which related to aggregates, not at an individual level. So, macroeconomics is that part of economic theory which studies the economy in its totality or as a whole. It studies not individual units like an household or firm or industry, but whole economic system. So, it is the study of aggregates and averages of the entire economy. And what topics we study in this book? These are level of employment, national income, aggregate saving and investment, aggregate demand, aggregate supply, general price level. These problems are related not to any particular unit, but to whole country, whole economy. So, we study, when we study about these aggregates and averages of the economy as a whole, then we are studying about macroeconomic theory. In short, macroeconomics is the study of national aggregates or economic wide aggregates. So, when we read about the scope of macroeconomics, so scope means field, subject matter. What do we study in macroeconomics? The topics are theory of national income, theory of employment, theory of money, theory of general price level, theory of economic growth. Since the subject matter of macroeconomics revolves around determination of level of income and employment, so it is known as theory of income and employment. तो macroeconomics को ही दूसरा नाम क्या दिया गया? Theory of income and employment. So, subject matter of macroeconomics includes this. Clearly, the study of problem of unemployment in India, general price level or problem of balance of payment is macroeconomic study, because these study to the economy as a whole. So, students, I am giving you only introduction of this. You purchase the book and start studying this book also. First chapter I have introduced you the meaning of macroeconomics. So, that is all for today. Thank you.